So good morning everyone. Today, like last day जो मैंने message किया था. So let us begin science today. Okay? So we are following NCERT book, exercise 11.3, and just after completing this exercise, we will start hyperbola. तो ध्यान देने एक बार पहला क्वेश्चन. Okay? So we have x square by 36 plus y square by 16 equals to 1. And just read the heading of the question. You are asked to determine the foci, vertices, length of the major axis, minor axis, eccentricity, and length of the latest vector. So note down it. X square के डिनोमिनेटर का वैल्यू y स्क्वायर के कंपैरिजन में बड़ा है. इसका मतलब है कैसा इलिप्स है बताओ तो यस tell me which ellipse is this. You are जो भी लास्ट डे अटेंड किया होगा क्लास वो लोग बोल पाएगा बताओ तो कैसा इलिप्स है ये. Horizontal. This is clearly horizontal ellipse. Very good. So we find that it is a horizontal ellipse of the form x square by a square plus y square by b square equals to 1, where we find that the value of a square is greater than the value of b square. Alright everyone, ये जो हम कंपैरिजन मतलब ये जो हम लोगों ने लास्ट में फॉर्मूला देखा था यहाँ पे a square b square से क्या है ग्रेटर है. So if I compare this equation with the general form, we find that the value of a square is 36. The value of b square is 16. a square का वैल्यू अगर 36 है तो a कितना हो जाएगा 6, b कितना हो जाएगा 4. You know that c square is a square minus b square, that is 36 minus 16. तो c का वैल्यू कितना हो जाएगा √20. √20 को हम लोग और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग 2√5. इसका अगर हम रफ स्केच ड्रॉ करें so we are finding that ये हाइपरबोला x एक्सिस पे कहां कट कर रहा है, एक बार -6 पे एक बार +6 पे और y एक्सिस पे एक बार 4 पे और दूसरा -4 पे कट कर. ओके फोकाई कहां पे होगा, इट इज 2√5, 0 and -2√5, 0. ऑलराइट, अब हम लोग इसका सारा सब पॉइंट्स लिखते हैं एक बार. सबसे पहला चीज इस इलिप्स का सेंटर क्या है, सेंटर ऑफ दिस इलिप्स इज 0, 0, नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, इस इलिप्स का जो फोकाई है वो क्या बताना है, it is plus minus 2√5, 0, because you know that in the last class you check your copy. जिन्होंने अटेंड किया था अगर तुम अपना कॉपी चेक करो तो ये सारा चीज एक्सप्लेन किया हुआ था लास्ट. ओके सो द फोकाई इज plus minus 2√5, 0. Who can tell me what is the vertices of this ellipse? इस ellipse का vertices क्या है कोई बता सकता है? Anyone can explain me what is the vertices of this ellipse? Plus minus 6, 0. Yes, it is plus minus 6, 0, because you know that vertices means the point where the ellipse cuts the major axis. मतलब major axis का जो coordinates होता है, major axis का जो end coordinates होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, vertices बोलते हैं. तो vertices यहाँ पे क्या होगा, plus minus 6, 0 is the vertices of this ellipse we can say. Next, number 4. Which is the major axis in this ये ellipse में major axis कौन सा axis है?
Major axis is the x-axis, okay? And what is the equation of x-axis? Y equals to 0. It is y equal to 0. What is the length of the major axis? 2a. You know that 2a, that is, it is 2 6 and 12. It is 12 unit. उसके बाद हो गया number 5, minor axis. Minor axis is the y-axis we can see, and the equation of y-axis is minor axis is y-axis, major axis is x-axis, and so the equation of x-axis is y equal to 0. Equation of y-axis is x equal to 0. And what is the length? Length of major axis, minor axis is 2 4 8. Next we have eccentricity. You know, eccentricity is a ratio of c by a. C by a, that is 2 root 5 by a, that is 6. So the answer is root 5 by 3. Next, number 7. 7 is length of the latest vector. Now, what is length of the latest vector? It is 2b square by a. Length is 2b square by a. What is the value of b square? 16 by a, which is 6. So it is 16 divided by 3 unit. This is the length of the latest vector. So I want everyone to copy down this sum and make similar type sum देगा, तो सबको ये भी करेंगे. बस और हम लोग 2 3 ही सम करेंगे, उसके बाद हम लोग स्टार्ट कर देंगे हाइपरबोला, बिकॉज ये सारा सम बहुत आसान है. यू कैन ट्राई दिस एट. ओके, आगे कॉपी डाउन फर्स्ट. Try the next question everyone. And the question I am giving you is number 6. It is x square divided by 100 plus y square divided by 400 equals to 1. Okay. Yes, sir. So we find that this is clearly a vertical hyperbola. Whose form is x square by b square plus y square by a square equals to 1. So the value of a square is 400. The value of b square is 100. The value of c square is 300. A becomes 20, b becomes 10, and c equals to root 300. Which can be written as 10 root 3. इसका मैं बस एक रफ स्केच ड्रॉ कर दे रहा हूँ. तो ये 20 minus 20 minus 10 plus 10. ठीक है, वर्टिकल हाइपरबोला हो गया, एलिप्स हो गया. फोकाई हो गया 0, 10 root 3, 0, minus 10 root 3. समझ में? And you can complete the rest. Now see the next sum. Okay, see the next sum, everyone. Now the next question is question number 13 and number 19. 13 and 19. Next question.
In question number 30, we are given the ends of the major axis. So let me draw the figure, that will be better. हम लोग को यहाँ पे मेजर एक्सिस का एंड्स दिया हुआ है, और माइनर एक्सिस का भी एंड्स दिया हुआ है। तो बता सकते हैं तुम माइनर एक्सिस और का एंड्स और मेजर एक्सिस का एंड्स को देख करके कि ये कैसा इलिप्स है, बताओ तो। यस, कैसा इलिप्स है ये? Is this vertical or horizontal? Tell me. Horizontal. It's clearly horizontal because it is more stress along x-axis as compared to y-axis, so it is clearly horizontal. जहाँ पे इसका अगर हम देखें तो vertices, I mean अगर हम compare करें, you know that major axis का ही coordinates क्या होता है? Vertices होते हैं. तो what is the value of A? If I say the value of A is 3, and what is the value of B? The value of B is 2. So if you know the value of A and the value of B, you can determine the ellipse. And what is the required ellipse? X square by A square plus y square by B square equal to 1. Okay. X square by A square, that is x square by 9. Y square by B square, that is 4 equals to 1. इसमें कोई किसी को डाउट है? बहुत आसान था ये, क्लियरली सब कुछ यहाँ दिया हुआ है। मेजर एक्सिस का कोऑर्डिनेट्स, माइनर एक्सिस का कोऑर्डिनेट्स। तो मेजर एक्सिस का कोऑर्डिनेट्स मतलब क्या है? ये ए है, ये ए का वैल्यू है, ये बी का वैल्यू, समझ में? कॉपी डाउन एंड कंप्लीट एंड देन ट्राई द नेक्स्ट सम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 19. ओके एवरीवन, इसके बाद नेक्स्ट सम ट्राई करेंगे नंबर 19. So the next question, that is number 19. Center of this ellipse is 0, 0. Then major axis is on the y-axis. So if major axis is on the y-axis, means it is clearly vertical ellipse. Okay, major axis on the y-axis, it passes through the point 3, 2 and 1, 6. 3, 2 and 1, 6. So ध्यान से कर देखना है. Since center is 0, 0 and major axis is the y-axis, therefore the required ellipse is vertical of the form. ये vertical है जिसका फॉर्म क्या है? x square by b square plus y square by a square equals to 1, and write down that a square is greater than b square. अब देखो ये इक्वेशन में हम लोग को a और b का वैल्यू को आइडेंटिफाई करना है, और ये इलिप्स किस पॉइंट से पास कर रहा है? एक 3, 2, दूसरा 1, 6. So since 3, 2 and 1, 6 is a point on an ellipse, so we can say that
at the place of x and at the place of y put 3 and 2, तो ये क्या हो जाएगा 9 by b square plus 4 by a square equals to 1, mark it as equation number 2. अब एक बार x की जगह पे 1 और y की जगह 6 लगा देना, तो ये हो जाएगा 1 by b square plus 36 by a square equals to 1, mark it as equation number 3. Alright everyone, now we have to solve both these equations to obtain the values of a square and b square. दोनों को solve करके a square और b square का वैल्यू हम लोग को निकालना है. Now everyone solve both these equations, but I suggest you all to solve in, I mean जो मैं तरीका बता रहा हूँ उस तरीका को फॉलो करो because ज्यादा इजी होगा. देखो एक बार कैसे क्या करना है, देखो लाइक इक्वेशन नंबर 2 और 3 दोनों से 1 by a square का वैल्यू मैंने निकाला. इसको मैं रफ में शो करता हूँ. If I calculate the value of 1 by a square, so 1 by a square will be equal to 1 by 4. 1 by a square will be equal to 1 by 4. ठीक है, तो ये 1 by a square का हम लोगों ने वैल्यू निकाल दिया इक्वेशन नंबर 2 से. अब इक्वेशन नंबर 3 से भी 1 by a square का वैल्यू निकालना. ओके, अब ये दोनों केस मतलब इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 से इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 में 1 by a square निकाल करके इक्वलाइज कर दो दोनों का टर्म्स को. समझ में आया तो क्या बोला मैंने? पहला इक्वेशन नंबर 2 से 1 by a square निकाला, ये है. इक्वेशन नंबर 3 से 1 by a square निकाला, ये है. अब दोनों को इक्वलाइज कर दो. सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 2 and 3, we get 1 by 4 1 minus 9 by b square equals to 1 by 36 1 minus 1 by b square. सॉल्व करो दोनों से. एक बार इसको सॉल्व करो. सॉल्व करके देखो तो b स्क्वायर क्या है. ठीक है, समझ में? यहाँ से सॉल्व करके एलसीएम लेके b स्क्वायर निकाल दो एंड देन so what is the value of b square in can you first is can anyone so we got answer 10. And what is the value of a square? Just put the value of b square in any one of the equation, you get the value of a square. So tell me what is the value of a square? What is the value? The value of b square is 10, or the value of b is 10? B square. B square 10. So what is the value of a square? Tell me. So 40. 40. Yes, sir. Okay. Now just put the value of a square and b square in equation number 1. So the required equation is. Sir, like this
Equations, but solving the equations, do we need to show them in the exams? Yeah, you have to solve, I mean, show the steps to like how you determine the value of a square and b square. Okay, sir. Okay, sir. Now putting a square equals to 10, 40, and b square equals to 10 in equation number 1. We get x square by b square plus y square by 40 equals to 9. This is a requirement. Okay. Excuse me, sir. Yes. So just like one question regarding the syllabus, is first. Now, students, listen here. We have completed, I mean, ellipse. Okay. Now let's begin in the next class.